हेलो। पिछले क्लास में कल हम लोगों ने देखा था ब्रेन टीजर का सारा क्वेश्चंस। हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन इन ब्रेन टीजर एज वेल एज हॉट्स? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। देखो तो मेरी आवाज नहीं आ रही है, क्यों? किसी बच्चे को ब्रेन टीजर और हॉट्स में कोई डाउट्स है क्या? सर वॉइस बहुत धीरे आ रहा है। अच्छा ठीक आएगा। करो। छोड़ दो, फिर आएगा आवाज। आएगा, चलो करो ना। हेलो। 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 यस सर। आवाज सुनाई पड़ रही है ना बेटा? सर बहुत धीरे वॉइस आ रहा है। सर हाँ। बहुत धीरे आवाज आ रही कोई बात नहीं है, बोर्ड पर हम लिख भी रहे हैं। मुझे बताइए कि ब्रेन टीजर या हॉट्स में कहीं कुछ डाउट्स है? नो सर। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री देखिए, जो बोर्ड पर लिख रहे हैं सारे बच्चे उसको नोट कीजिए। ओके सर। ओके। रोटेशनल सिमेट्री देखो, in your previous class already you have learnt about symmetry, line of symmetry of different figures. Now सर वॉइस बहुत धीरे आ रहा है। बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं। देखिए रोटेशनल सिमेट्री, सबसे पहले देखते हैं हम लोग रोटेशन। फर्स्ट वन इज रोटेशन की व्हाट इज रोटेशन in rotational symmetry. At first you have to see about rotation, the process of turning an object around a fixed point, the process of turning an object around a fixed point around a fixed point is called rotation. That is blades of a fan rotate about a fixed point in clockwise direction. Wheel of a bicycle can rotate in clockwise and anti-clockwise direction. जैसे first one it is just blade of a
fan rotate about a fixed point in clockwise direction, as well as second point is, this is your first point. Second point is this: wheel of a bicycle can rotate. Wheel of a bicycle can rotate in clockwise and anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. When an object rotates, its size and shape do not change. देखिए बेटा, this is your wheel of bicycle. This can be rotated about this certain fixed point. This can be rotated about this fixed point. So the process of turning an object around a fixed point is called rotation. In case of rotation, the size and shape of an object do not change. लिखेंगे, in rotation, the shape and size of an object do not change. In case of rotation, the shape and size of an object do not change. In rotation, the shape and size, सारे बच्चे इसको लिखेंगे. In rotation, the shape and size of an object do not change. Second one is center of rotation. इसको रब कर दें. हेलो. सर 2 मिनट. हाँ ठीक है, नोट कीजिए. यस सर, लिख लिया. वेरी गुड, सारे बच्चे लिख लिए. Yes, sir, I have written. ठीक है बेटा, सारे बच्चे लिख लिए. नेक्स्ट वन इज सेंटर ऑफ रोटेशन. दिस इज वेरी इजी चैप्टर. Second one is center of rotation. Second one is center of rotation. Center of rotation में देखेंगे हम लोग the fixed point about which the fixed point about which the fixed point about which the object rotates the fixed point about which the object rotates is called center of rotation. It's called center of rotation, as well as first
First one is this. Second one is angle of rotation. Angle of rotation. Angle of rotation is this. The angle of turn. The angle of turn during rotation. During rotation is called angle of rotation. Is called angle of rotation. On the other hand, you can say the same. सारे बच्चे इसे लिखेंगे. This is called angle of rotation. The angle of turn during rotation is known as the angle of rotation. देखो किस तरह से करते हैं. This is called angle of rotation. Yes, sir. This is called the angle of rotation. सारे बच्चे इसको नोट करेंगे. Sir, कर लिए. That is, and on the other hand, we can just define angle of rotation as follows. Angle of rotation is the angle through which an object turns before it looks as it did originally. यानी जिस एंगल पर रोटेट होता हो कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से कि फाइनली ओरिजिनल फॉर्म में दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन. किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से रोटेट कीजिए कि फिर वो ओरिजिनल फॉर्म में दिखाई दे. हाफ रोटेशन करने पर, क्वार्टर रोटेशन करने पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फुल्ली अपने सब पे दिखाई देता है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में दिखाई देता है, उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन. एंगल ऑफ टर्न कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन. ओके. ओके. नेक्स्ट वन इज इसको रब कर दो ना. Yes, sir. Next one is order of rotation. Order of rotation. Order of rotation क्या है इसको देखिए. If an object looks exactly the same after a certain amount of rotation, if an object looks exactly the same after, if an object looks exactly the same after a certain amount of rotation,
less than 360 degree is called rotational symmetry. Rotational symmetry and in a complete turn, in a complete turn, the number of times an object looks exactly the same is called order of symmetry. Hence, order of symmetry is equal to, सारे बच्चे यहाँ तक नोट करेंगे. After that, I'm just going to formulate a formula order of symmetry. सर बोर्ड याद आ रहा है. अच्छा ठीक है बेटा, साफ हो जाएगा. यस सर. अब साफ आ रहा बेटा? नो सर. साफ आ रहा बेटा? यस सर, अब क्लियर है. हाँ ठीक है. कभी कभी नेट की वजह से हो जाता है ऐसा. सारे बच्चे इसको नोट कर लिए? यस सर. इसको रब कर दे बेटा. यस सर. ओके. नेक्स्ट वन इज hence order of symmetry. Here order of rotational symmetry क्या लिख देते हैं बेटा? Order of symmetry और rotational symmetry both are same. Hence order of rotational symmetry. Hence order of rotational symmetry rotational symmetry is equal to 360 degree by angle of rotation